In previous lecture, we were discuss about some issues about constructor, or we can say the characteristics of constructors. What is constructor? How we have to use constructor in the class, and what is the definition of constructor? It is just use the similar name of the class, and what is the object creation effect on the constructor. All these things we were discussed in previous lecture. We also discussed uh, introduction of constructor, default constructor, and this example also discussed by us. So now in this way, we will start with another type of constructor, that will be the parameterized constructor. Before going in parameterized constructor, we have to discuss a demonstration of default construction, that will be here. So here some instructions about default constructor. What is default constructor and what is characteristics? These things are included here. There is a code. In this code, there will be a class of name sample and two data members A and B. Okay. After that, if you move forward, then there will be okay, one object created of class sample, that one S1. Okay, so whenever the S1 created, obviously object takes space in memory. ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में वो स्पेस अपने लिए ऑक्यूपाई करेगा. There will be space for A and space for B because of these two are data members of the particular class. Okay, then here we have to define a default constructor, that will be a sample, and here the value of sample variable A will be 5 and variable B will be 10. So values are inserted automatically whenever the object is created. After that, you will call a function s1.display. So the result is displayed here. है ना? तो आपको सैंपल को कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपने जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल किया वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमने ओनली डिस्प्ले फंक्शन को ही कॉल किया है. Okay, now we will discuss about the parameterized constructor. So in this way, if we talk about parameterized constructor, then it is a constructor that takes some arguments, or we can say accept some parameters. It will be have same characteristics as default constructor, but the difference is that it accepts parameters. Default constructor not accepts parameters. Only the single difference here. Okay, so if we talk about the difference, then the difference will be like ABC is the class, then we can say ABC is the default constructor. है ना? हो सकता है ये कंस्ट्रक्टर आपने बनाया हो सकता है कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट किया हो, है ना? बट इन केस ऑफ parameterized constructor, there will be some parameters passed in the constructor. We can say int x. It will be the difference. Only single difference available here. Okay, then you can easily differentiate both of them, default and
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो कोई पूछ सकता है, जो भी आपको पूछना होता है ना। ओनली द सिंगल डिफरेंस, इट एक्सेप्ट्स द पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर, दैट विल बी द डिफरेंस। ओके, there is some more differences in main function also. Whenever you take a parameterized constructor, that is a constructor, the class test, here the name of constructor will be test, and there will be a single parameter that will be value. Okay, parameterized constructor with one argument. You can see this. And this value copied in variable num, that will be the data member of class. So whenever you create the object test t, you must pass the value of the parameter. देखो हम मेनली वैल्यू कब पास करते हैं? Sir, जब class name and constructor name always be same. मैं फिनिश कर लेता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लेना। ओके, टेस्ट हमारी क्लास नेम है। मेनली हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। टेस्ट इज ऑल्सो ए फंक्शन, इट इज कंस्ट्रक्टर बट इट इज ऑल्सो ए फंक्शन। कंस्ट्रक्टर इज ए फंक्शन। नॉर्मल फंक्शंस को हम वैल्यू कब पास करते हैं? जब हम उसको कॉल करते हैं। बट कंस्ट्रक्टर को तो हम कॉल ही नहीं करते, तो उसको वैल्यू कब देंगे? तो कंस्ट्रक्टर को वैल्यू हम जब देंगे जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, ओनली single difference here in the class that it accept parameters, and single difference in main function that will be that you have to pass a value whenever you create a object. Okay, we have to demonstrate this parameterized constructor. Parameterized constructor. So there will be a parameterized constructor. How it is work? The class name is sample, and we have to create a constructor also with name sample. So that is the name, and that is these are the data members A and B. After that, there will be a object created by us, and there will be two values passed with the object. Okay, here S1 is an object of the class sample created by the user with different argument values. There are two argument values, 10 and 20. So how these values are stored in the memory and what kind of process happened after the creation of this S1 object with two arguments. So you can see these are two locations occupied by the object in form of A and B, because of there will be two data members in form of A and B. Okay, the constructor will be with two arguments x and y. So value of x will be passed to A and value of y will be passed in B. So we can say 10 transfer to x and 20 transfer to y, and x transfer to A and y transfer to B. It means the value of A will be 10 and the value of B will be 20. So these are the A and B, okay, 10 and 20. Okay, then you have to call another functions of the class.
So here we have to call the display function, and value of A and B will be displayed in form of 10 and 20. So it will be the parameterized constructor. Next one is the copy constructor. It means you can understand in it in this form that whenever you want to copy something from one object to another object, then you can use the copy constructor. Suppose there is two objects like a class ABC, and there will be an object like P and Q. These are two objects. Whenever you want to copy one object to another object, then you can take it easily by the using objects. Okay, so we can see first demonstration, then we will discuss about the theory. Because of the processing of copy constructor is little bit different. So we have to take first demonstration, then we will discuss about the theory part of this particular constructor type. Uh, where is the copy constructor? Okay, we have to read carefully some instructions like copy constructor create an objects. Every constructor can create a object. Default constructor भी create करता है. Parameterized constructor भी जब object create होता है तभी initialize होता है, और copy constructor भी. So that statement will be same for every constructor. है ना? Constructor creates an objects by initializing it. An object of same class which has been created previously. इसमें ये डिफरेंट है कि पहले से जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसको भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो. ठीक है. A copy constructor is used to initialize an object from another of the same type. It means you can copy one object in another object. Copy an object to pass it an argument to function. So we can take a demonstration first. There will be a class sample with variable name A and B. These are two data members. Okay. So sample which consists two integer fields A and B. The sample S1 object is created. That is the simple parameterized constructor, and S1 takes space in the memory for A and B. है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देयर इज नथिंग न्यू. ठीक है. कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डन बाय अस. ओके. देयर विल बी वैल्यूज स्टोर्ड 10 and 20. ओके. सो 10 and 20 है ना. ओके. देन द display function will called and the output will be 10 and 20. यहां तक का काम हम कर चुके हैं. Then what is the next? You can see in the next instruction there will be a object S2 created of sample class and object S1 copy in the S2. It means what is the object S1? Object S1 is a we can say object that already taken the value of A and B using the
parameterized constructor. So their value of A and B will be 10 and 20 respectively. Now you want to access them with S2 also. Then we need to copy that particular constructor in S2 also. जो S1 के पास कंस्ट्रक्टर है उसको हमें S2 में भी कॉपी करना होगा. That will be the copy constructor. You can read this statement here. New object S2 is created from existing object S1. हम S1 की सहायता से यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ रेफरेंस कौन दे रहा है? S1 दे रहे हैं. डेटा किसके पास है? S1 के पास है. पैरामीटराइज को पहले किसने कॉल किया था? कंस्ट्रक्टर को S1 ने कॉल किया था. Copy of existing object values will be sent to the newly created object. यानी S1 के पास जो भी डेटा रहेगा वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? S2 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. There will be a copy creation system. So you can see the constructor like this used by the compiler. After copy the S1 object into S2, the copy constructor will call. है ना? ये आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. There is no necessary to create by you. Okay. Sample address sign of S1. Okay. तो A में आपको कॉपी करनी है S1 डॉट A. S1 कौन है? आपका प्रीवियस ऑब्जेक्ट है. और S1 डॉट B आपको B में कॉपी करना है. So these are the value copy system, and these values are 10 and 20 transferred to A and B for the object S2. Okay. So memory is created to object S2, which consists two integer variables A and B, and the copy values from S1 of A to S2 of A, and copy of B variable from S1 to S2 B variable. You can call now display again. That display again works for the object S2 because of you have to call with S2 dot display. So that will be the copy constructor. Whenever we need to create a new object and we have to take a copy of previously object, then we need to create a copy constructor. So now I think some points are clear to us. Now we can discuss about the theoretical terms. If we talk about the theoretical terms, then there will be a initial structure that will be the we can say what is the syntax, class name, and class name with address sign. Why we use the address sign? Because of we have to pass the reference of the object here. You can you already seen in demonstration. And that's why we need to define a address sign. Mainly क्या करता है देखो, compiler we need to use copy constructor. किसको यूज करना है? कंपाइलर को यूज करना है. आपको रिक्वायर्ड नहीं. यू कैन पुट ऑल्सो, आप भी इसको कर सकते हो, बट अगर आप नहीं करते हो, डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हो, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करे, है ना. आप नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. That is the responsibility of compiler. You don't need to define copy constructor in your class. So the syntax will be the class name, and whenever you create the object,
there will be two different ways. हमने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर ये वाला तरीका देखा था, है ना? वहां पे क्लास नेम था सैंपल, ओके, और हमने S2 क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने S1 को कॉपी किया था. You have another way also. You have put the class name sample and you have create the new object and you can put previously object as parameter. जैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर को आप पैरामीटर देते हो ना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम, उसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू की जगह आप ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास कर सकते हो, जिससे क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के पास जो भी वैल्यूज होगी उसके लिए आप एक्सेसिबल होगे, फिर S1 के पास वो वैल्यू चली जाएंगी. तो both ways are available. You can use any one from these both methods. Okay. And some another points like compiler will copy the instance जो भी आप रखोगे, ठीक है. जैसे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, S1 एक ऑब्जेक्ट है जिसने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया पहले ही. Whenever you create the S2, you have to copy the value of S1, that will be the copy constructor invoked. जैसे आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वॉक हो जाएगा. देन यू हैव टू, वी कैन से द कंपाइलर विल कॉपी द इंस्टेंसेस ऑफ S1 to S2. Okay. And what is the next? If the user has not defined a copy constructor, है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपल्सरी नहीं है कि आप डिफाइन करो. The compiler automatically creates init public section and execute it. Okay. So it will be the responsibility of compiler. Okay, the next one is the point is the user can define their own copy constructor. ना? You can define your own copy constructor also. जरूरी नहीं है कि आप कंपाइलर पे इस चीज को हमेशा छोड़ो या कंपाइलर पे आप डिपेंड रहो. यू कैन डिफाइन योर ओवन ऑल्सो. ओके. Okay, same argument. That is the particular thing like this. Okay. अगर आप पैरामीटर्स के रूप में पास कर सकते हो, then simple, there is no problem. You have to read this statement. If the user try to pass the argument by value, there is two type of argument called by value and by reference. We can say here we include the symbol of reference. Okay, so you can pass with value also, like sample, but you have to put the constructor name here. We can see the class name here. ना class name कह दो या constructor name कह दो, both are same. Okay, so only you have to put the object. What is the syntax here? Sample, S1. Okay, S2 के साथ आप S1 को कर सकते हो, जैसे ये वाला है. और you can with address sign also according to this syntax. दोनों ही आपके पास अवेलेबल है. But in some situations there will be some errors occurred by the memory allocation system. What is the error? Error is
out of memory error. Why the out of memory error defined here? Because of whenever you not transfer the reference, or we can say address, only आप values transfer करोगे, then there is a problem that you can't copy the proper values because of S1 के अंदर A और B ने क्या मेमोरी एड्रेस ले रखा था ये आपको पता नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओनली डेटा मेंबर्स के लिए स्पेस नहीं लेता है, कुछ और स्पेस भी लेता है. जैसे आप इसके अंदर देखोगे, देखो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम एक बार और देखते हैं. इन दिस S1 take space in all that boundary. In S1 there will be A and B, but A और B के अलावा भी कुछ स्पेस इसने allocate कर रखा है for the other processing or other like message passing or some kind of communications. So whenever you not transfer the proper address of S1, then the copy of the values will be create the problems because of their exact address is not found. That's why there will be the error occurred regarding the memory allocation. Okay, so you need to focus on and you have to careful about this. आप पास कर सकते हो values को, there is no problem in the program or in sense the we can say compiler, but there will be a problem of memory allocation system. That's why the compiler gives you a error out of memory error. The next one, when an argument is passed by value, है ना, अगर आप वैल्यू से ही पास करना चाह रहे हो, है ना, देयर विल बी chances to occur a error out of memory error, but a copy of it is constructed, है ना. तो ये क्या करता है, मेनली वैल्यूज को कॉपी करते हैं. जब आप पास बाय वैल्यू करोगे तो ओनली वैल्यूज आर कॉपीड. ठीक है. Then what is the next, values copy हो गई but not stored now with the second object. अभी तक केवल आपकी values copy हुई है. Copy constructor is creating a copy of the object for itself. ये काम कौन करेगा, आपका copy constructor करेगा. वो अपने लिए उन values को copy करेगा. So it calls itself. It means copy constructor calls itself for the values. So it is just kind of we can say reverse process or we can say recursion process. Whenever you pass the value as a value and the constructor is created by the compiler and then constructor call itself and then the values are copied for the use. अगर हम डायरेक्टली जाएंगे तो हमें आउट ऑफ मेमोरी एरर को फेस करना पड़ेगा. बट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग कॉल इटसेल्फ. ओके, क्योंकि हम S के पास जाए नहीं, S1 के पास जाए नहीं रहे. जब हमें S1 के पास जाना नहीं है तो हमारे पास मेमोरी की प्रॉब्लम रहेगी नहीं, क्योंकि वैल्यूज तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के पास कॉपी होके आ गई है. देन वी हैव टू पुट देम इन S2. दैट विल बी द प्रॉब्लम. एड्रेस साइन के बिना सिर्फ इतनी प्रॉब्लम आती है कि S2 में आप किस मेमोरी लोकेशन पे पहले पुट करोगे, बिकॉज ऑफ देयर इज नो मेमोरी रेफरेंस. हमें जरूरत ही नहीं है, हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को दोबारा कॉल कर लेंगे जब हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. सो यू कैन से द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द call itself, but that is the internal process of
compiler, you don't need to know more about this, है ना? ये इसका अपने कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. You have to just get similar codes. In fact, it calls itself again and again until the compiler runs out of the memory. यानी यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो अपने आप को बार बार कॉल कर सकता है जब तक कि आपकी मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी नहीं हो जाए. आउट ऑफ मेमोरी का मतलब यहाँ पे देखो, आउट ऑफ मेमोरी से क्या है कि आपकी जो S2 ने मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया था ना, वो जब तक फिनिश ना हो जाए. और वो फिनिश कैसे होगा? जैसे मान लो यहाँ पे S2 ने मेमोरी स्पेस ले रखा है, ए और बी के लिए स्पेस ले रखा है, पर बाकी जगह पे स्पेस खाली पड़ा है ना. बट अगर आप यहाँ पे जितना भी स्पेस खाली है सब जगह ए और बी, ए और बी, ए और बी भर दो, क्योंकि जितनी बार कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतनी बार ए और बी की नई लोकेशंस एलोकेट की जाएंगी. यहाँ पे एक बार कॉल हुआ है इसलिए ए और बी को एक एक मेमोरी एलोकेशन असाइन की गई है. अगर सेकेंड टाइम कॉल होगा देन यहाँ पे एक एक और मेमोरी एलोकेशन असाइन की जाएगी. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसा तब तक करता है जब तक कि S2 के पास एलोकेटेड स्पेस फिनिश नहीं हो जाता, जब तक कि मेमोरी आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो जाती. उसके बाद आप कहीं से भी ए की वैल्यू एक्सेस करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो वैल्यू एग्जैक्ट है. Okay, so that will be the solution, but that is not a we can say efficient solution because of there will be memory wastage, or we can say the uh, complexity, or we can say the processing speed also slows down because of the multiple calls are take place. That's why we need to pass the reference by reference, है ना, must pass. ओके, हमें यही यूज करना. हम कॉल बाय वैल्यू कर सकते हैं बट हमें कॉल बाय रेफरेंस ही करना, बिकॉज ऑफ कॉल बाय वैल्यू इज नॉट ए efficient solution. There will be example of copy constructor. Here is a class of name sample and two data members here, A and B. Then in main function, we have to start from here. First, we create a object with S1 name and gives two values 10 and 20. So we can say the value of 20 goes in the X and value of 10 goes in the, we can say, X. Okay, so here will be 10 or here will be 20. That will be the memory space of S1. Okay, so here the memory allocated to A and memory allocated to B. So there will be 10 and there will be 2 in B. Okay, so that work will be processed whenever you call the create the object. After that, you have to display the value of these variable A and B. Then you got the output. We can say here the output will be 10 and 20. Okay. After that, whenever you create the object S2, you can write in form of S2 equal to S1, and you can write it as S2 S1.
Okay, we don't need to create the copy constructor here. अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करते, देन आप यहाँ पे क्या क्रिएट करते, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. जैसे ये आप स्टेटमेंट लिखोगे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर बनाएगा. सिंपल. Okay, or what is the parameter here? Simple is the class name. It means the data type of given object or S1. It will be created by the compiler. और चाहो तो आप भी इसको पहले से क्रिएट करके छोड़ सकते हो. Then what is the body of this constructor? Here in value of we can say a variable of a, s1 dot a will be happen. क्योंकि ये s1 के a में वैल्यू 10 पड़ी है, तो जैसे ही आप ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे, आप लिखोगे या कंपाइलर लिखेगा, जो भी आपका एग्जीक्यूशन होगा, s2 at that time in a of s2 there will be 10. Okay, and after that whenever you execute the statement b equal to s1 dot b, then you have to get a value for the object s2, that will be 20. Okay, so that is the processing. अब चाहो तो आप इसको क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हो, और आप डिफाइन नहीं करते हो तो जैसे आप ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे, कंपाइलर ऑटोमेटिक इसको डिफाइन करेगा. ओके, सो दैट इज द वर्किंग ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर. I think you all understand about the copy constructor. If there is any doubt, you can ask. No, sir. Okay. Everything is clear. Okay, then we need to discuss about the constructor overloading. It is just a like function overloading. जैसा कि हमने फंक्शन के अंदर किया था, फंक्शन ओवरलोडिंग हमने डिस्कस किया था. It is also similar to function overloading. There is no difference. Only the difference is that there will be the we can say the constructor name will be same as class name. So you can define multiple constructors in the your class In a also, class. है ना. तो यहाँ पे अगर सैंपल की हम बात करें, जैसे मान लो सैंपल ही क्लास का नेम हम ले लेते हैं, तो यू कैन डिफाइन दिस, you can define sample this. Okay, you can define this int x comma int y. है ना, you can define multiple constructors in the class. What is the issues here and what is the changes in the main function due to these multiple constructors? The changes we can say there will be the in main function will be sample
you have to create the object according to these constructors. So we can say if there will be the constructor P, an object for constructor 5 and P of 10 and 20. So these three objects you have to create for these three constructors calling. सिंपल पी आप लिखोगे तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. डबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ करोगे तो डबल पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा. दैट इज द difference only in reference of object creation, in reference of multiple constructors. We can say overloaded constructors. You can see the example for them. There will be a class of name test and num1, num2. These are two data members, and there will be a default constructor with name test and num1 num2 initialized by the constructor, and there will be one more constructor with value 1. So num1 and num2 initialized with that particular value, num1 value 1 and value 1 plus 5. Okay, then there will be two parameters. These are initialized the variable num1 and num2. So these are the constructors with same name in multiple forms in a single class. Okay, so what is the calling scenario here? Just you have to create a object of class test, then you have to call the default constructor. And whenever you create a object with single parameter, then you have to call this function. And whenever you create a object with two parameters, then you have to call this function. Okay, so these are the variations of the calling scenario for multiple constructors. Okay, there will be some, we can say, demonstration. We can say some, discuss about some errors or some kind of things. Our time also running out. I think there will be no demonstration available. Okay. So there will be no demonstration available for this because of all things are used of default constructor, parameterized constructor, है ना. इसलिए यहाँ पे दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का भी डेमोन्स्ट्रेशन हम कर चुके हैं. सो इट विल बी द नॉट रिक्वायर्ड स्टेटमेंट. Okay, so that will be the sufficient for the overloaded constructor. कितना बचा हम कंप्लीट कर सकते हैं क्या? Yes, we can discuss it, है ना. इसको हम फिनिश कर लेते हैं. अभी हमारे पास 3-4 मिनट का टाइम पड़ा है. What is the distractor? Distractor is nothing. It is a similar function to constructor. There is a single difference in definition of constructor and distractor. That will be the sign of tilde. You have to use the tilde sign with the distractor. It is used for the
distract all these values constructed by the constructor. कंस्ट्रक्टर ने जो कुछ भी बनाया है मेमोरी के अंदर, जो कुछ भी क्रिएट किया है, उस सब को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं. इट विल बी ऑलवेज द नेम सेम एज द क्लास नेम और वी कैन से कंस्ट्रक्टर नेम. Okay, so there will be the statement like we have to use the tilde symbol and uh, we can say distractor is called automatically by the compiler. आपको इसको भी जैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, वैसे डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है. कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब आपके उस ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है. इट मींस मेन फंक्शन जैसे ही फिनिश खत्म होने वाला होता है, मेन फंक्शन का जो एंडिंग कर्ली ब्रेस होता है, वहां पे ऑटोमेटिकली कंपाइलर डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है. आपको कॉल करने की जरूरत नहीं. ओके, डिस्ट्रक्टर क्लीन्स द मेमोरी स्टोरेज, है ना, जिसको हमें बाद में एक्सेस नहीं करना, दैट इज नो longer accessible, then why we need to occupy this particular memory location? We have to release this, है ना. It is the important statement. You have to write this. It is not possible to define more than one distractor. आप यहाँ पे एक से ज्यादा डिस्ट्रैक्टर डिफाइन नहीं कर सकते. जैसे कंस्ट्रक्टर आपने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के अंदर एक से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर्स बनाए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. यू हैव टू डिफाइन ओनली सिंगल डिस्ट्रक्टर इन ए क्लास. वहां पे अगर आपके 5 कंस्ट्रक्टर्स भी बने हुए होंगे तो उन सभी 5 कंस्ट्रक्टर्स के डेटा को ये डिलीट कर देगा, है ना. ओनली सिंगल डिस्ट्रक्टर इज रिक्वायर्ड. ओके, दैट इज द सिंटैक्स. क्लास नेम सेम होगा, ओनली द सिंबल एडेड टिल्ड. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? नॉट. ठीक है. इट मीन्स द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्टर विल बी नोट कंस्ट्रक्टर. ओके. whenever the distractor is called, initialize an object. Okay, and कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होता है आपका ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, एंड डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डी इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. ओके, एंड it is called by the automatically compiler, and okay, all these things are the same. This is invoked in reverse fashion of the constructor, है ना. कंस्ट्रक्टर का उल्टा काम करता है. कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है या डिस्ट्रॉय करता है. इट विल बी द एग्जांपल. देयर विल बी 2 डेटा मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सैंपल क्लास. हमने ऑलरेडी देखा है कि ये इस प्रकार से S1 के अंदर डेटा क्रिएट करता है मेमोरी के अंदर. ठीक है, और ये A और B को वैल्यू इनिशियलाइज करता है. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. ओके, इन प्रीवियस एग्जांपल्स. देयर विल बी आई थिंक वैल्यू okay, not called by S1, that is called by S2. $10 and $20. Okay, there is 2 constructor. One is the sample and second is the sample with 2 parameters. First will be the default constructor and second will be the parameterized constructor. तो S1 के अंदर क्या होगा? S2 के अंदर तो हमने 10 और 20 कॉपी कर दिया. S2 के अंदर क्या होगा? सॉरी, S1 के अंदर, S2 तो हम ले चुके हैं. S1 के अंदर A की वैल्यू रहेगी, that will be 5, एंड S2 के अंदर क्या रहेगा? S1 के अंदर B की वैल्यू रहेगी आपकी 10. ओके, सो देयर विल बी मैसेजेस आल्सो डिस्प्लेड, है ना. जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑटोमेटिकली वैल्यूज इनिशियलाइज होंगी और मैसेज आएगा S1 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और हियर S2 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. So after that there will be a
डिस्ट्रैक्टर, है ना। यहाँ पे हम कुछ भी पैरामीटर नहीं देंगे, कभी भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी, जस्ट एक आपको टेल साइन जो है वो यूज करना। यहाँ पे हमने मैसेज दिया S1 एंड S2 ऑब्जेक्ट आर डिलीटेड। जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इन दोनों को मेमोरी से डिलीट कर दिया जाएगा। और ये कब होगा? इस कर्ली ब्रेस पे जैसे ही आपका कंपाइलर पहुंचेगा, उस टाइम ये डिस्ट्रैक्टर को कॉल करेगा। ओके, इट इज द क्लियर। These are some characteristics of distractor. We already discussed in at this particular slide. All these things are included in characteristics, है ना। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, so you have to read them.